Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammed Yusuf. Today we are going to talk about the role of nervous system in regulation of circulation. But before that, one ayah from Holy Quran, Surah An-Nahl, ayat number 90. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. वयनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इस आयत में अल्लाह पाक तीन बातों का हुक्म दे रहे हैं और तीन बातों से मना फरमा रहे हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यामुरु, हुक्म देता है, बिल अदल, इंसाफ का, अदल करने का, वल इहसान, और नेकी करने का, व इताई दिल कुर्बा, और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने का। ये तीन बातों का अल्लाह हुक्म दे रहा है। वयनहा, और मना करता है, अनिल फहशाए, बेहयाई की बातों से, मुनकर से, गलत बातों से, वल बग़ी, और बगावत से, रिबेलियन से। यइज़ुकुम, वो अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। तो तीन बातों का हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह अदल, एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है। रिश्तेदारों से अच्छे सलूक का टर्म है सिला रहमी। इताई दिल कुर्बा, कुर्बा को देना, सिला रहमी। और बदी, बेहयाई और ज्यादती से मना करता है। बग़ी, ज्यादती से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक हासिल करो। तो कितनी खूबसूरत बात है। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लें। अल्लाह हुक्म दे रहा है, अल्लाह कमांड्स जस्टिस, द एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड जेनरोसिटी to relatives, towards relatives, and he forbids all shameful, immoral deeds, injustice and rebellion, and he instructs you that you may receive guidance, कि आपको नसीहत हासिल। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। We discussed the local control of blood flow, and we emphasized and we discussed that it is local mechanism is very important. Every tissue is capable of regulating its blood flow according to its needs. And when long-term increase is required or decrease is required, then the vascularity change mechanism is also there. Long-term control and acute control is there. Then what is the role of nervous system in that? Whole of the vascular system is richly supplied with the sympathetic system, and there is parasympathetic system as well. So role of nervous system, blood flow primarily regulated by the local factors. We have discussed it. It is regulated primarily by local factors. That acute control or the long-term control, those are local mechanisms. Nervous system is concerned with the general regulation. What are those general regulation? Redistribution of blood in different areas. ये काम है. Redistribution of the blood. When blood flow to the brain has to be increased, then the nervous system will come and the blood, or when after ingestion of meal, blood flow to the GIT should increase, because that is active more and the blood flow will be redistributed. GIT का blood बढ़ना चाहिए. So redistribution of the blood according to the requirement to different areas, this is in the hands of the nervous system. It is the control of the nervous system. Increasing or decreasing the activity of the heart when it is required. For example, when the blood flow during exercise increase, there are more increased cardiac output is required during performance of exercise. Vascularity to blood की tissues की बढ़ चुकी athletes की, we have discussed in the last lecture. But during strenuous exercise, when the athlete is performing, there is very increased cardiac output is required at that moment.
So the increased activity of the heart contributes toward this more blood flow to the. So the activity of the heart has to increase or decrease at times. जब चाहिए. So increasing or decreasing the activity of the heart. This is the role of the nervous system. Rapid control of blood pressure. We are going to discuss next in next lectures. हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला after this lecture or one more lecture. That is the rapid control of blood pressure. There are several mechanisms to control the blood pressure. Rapidly acting mechanisms are the nervous mechanism, baroreceptors, chemoreceptors, and कुछ रेफर किया था last lecture में भी CNS ischemic response. CNS के blood supply जब कम हो जाए तो क्या होता है. So the rapid control of blood pressure is again the role of nervous system. And rapid adjustment of the circulatory system to acute changes in the needs of the tissue. यही अभी हमने बात की. Rapid adjustment redistribution is also a rapid adjustment. Needs tissue की change होते रहती हैं तो blood is readjusted according to the requirement in the different tissues. Exercise में muscle को blood जाना चाहिए, skin को क्या ज़रूरत है. And the after ingestion of meal GIT को blood जाना चाहिए, skin को या bone को नहीं ज़रूरत है. And the nervous activity जब brain की activity की ज़्यादा function required more blood flow should be there. So this rapid readjustment of the circulatory system to acute changes in the needs of the tissue is regulated by the nervous system. This we are going to talk about. So nervous system which is supplying the cardiovascular system is the visceral nervous system. It is the autonomic nervous system. That is sympathetic and parasympathetic nervous system. That is sympathetic nervous system, and the most of the nervous control is the sympathetic control. Parasympathetic का भी role है, not very important. Important role इसी का है. Sympathetic. Most of the nervous system control is sympathetic. Major role in every activity of the circulation. चाहे वो blood vessel की है या heart की है, major role sympathetic system का है. Activity of the heart and adjustment of the blood vessels, etc. And the redistribution of blood जो हमने अभी बात की. All this is the sympathetic functions. Sympathetic functions के जरिए से ये control होता है. Parasympathetic system is also supplying primarily heart को ज़्यादा supply है ऐसे. Minor role in the overall control of circulation. Heart को it is reduces the cardiac activity or the rate of the contraction of the heart is reduced. थोड़ा सा रोल है, minor role in the control of circulation, but very important control of the heart pumping activity. उस पर इसका काम है. ये blood vessel को ज़्यादा काम इसका नहीं है. Circulatory उसमें heart की rate को control करता है, pumping activity पे effect है इसका. Quite important आप बोल ले. But primarily it is the sympathetic system which is responsible for the control of nervous the circulation. Sympathetic system you may be knowing. Sympathetic system is the autonomic nervous system is a two neuronal system. जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी कुछ आइडिया होगा. There are two neurons. One is known as preganglionic neuron and this other one is the postganglionic neuron. The preganglionic neuron for the sympathetic system, they are located in spinal segments, spinal cord segments from T1 to L2. 12 segments of thoracic segment and 2 lumbar segment of the spinal cord. So the preganglionic neurons are present in the spinal cord from T1 to L2 spinal segments. And these fibers, and you must be knowing, or you may study in later on, that is in these segments from T1 to L2, there is an intermediolateral horn of the gray matter in the spinal cord in cross section. If you cut a cross section in this area of the spinal cord, there is an intermediolateral horn of the gray matter. In this, the preganglionic neuron, cell bodies of the neuron, perikaryon, they are present in this intermediolateral horn of the spinal cord.
The fibers leave the spinal cord. The preganglionic neurons are located. The axons will pass along with the neurons in the they leave the spinal cord and synapse with the neurons in the ganglion forming sympathetic chain. ये spinal nerves के साथ ये बाहर निकल जाते हैं. These preganglionic neuron, and they synapse mostly ज़्यादातर they synapse with the second neuron which is located in the form of the sympathetic chain on both sides of the vertebral column. ये बाहर vertebral column के बाद they are on the sympathetic chain forming sympathetic chain. आगे diagram में आ रही है, तो उसमें ये terminate करते हैं, and from there mostly the postganglionic neuron is there in the cell body, is present in those ganglia in the sympathetic chain, and the second uska fiber फिर supplies the blood vessels or the heart. We are talking about blood vessel in the heart, less of the viscera. They are also supplied by the sympathetic system. We are concerned with the heart and circulation to supply यहाँ से है. The vasomotor fiber, these fibers, sympathetic fiber which are going to the cardiovascular system, they are named as vasomotor fibers. They are so they are known as vasomotor fiber. They go to the CVS, cardiovascular system. Heart को भी जाते हैं, vessels को भी जाते हैं. Special sympathetic nerve do vasculature of the viscera and the heart. ये हम जो हार्ट की बात करें, वेजोमोटर फाइबर कौन से हैं? These are the sympathetic fiber which are going to the heart, which are going to the viscera. And these blood vessels of the viscera, हम circulation के साथ concerned है. They are supplying the GIT, smooth muscle को भी supply है इनकी, and sphincter को भी supply है इनकी, bladder को भी supply है इनकी, but we are not concerned. We are concerned only supply of the sympathetic to the vessels in these viscera. चाहे bladder की blood vessels हैं, GIT की blood vessels हैं, या skin की blood vessels हैं, muscle के blood vessels हैं, and heart को supply कर रहे हैं. Spinal nerves to the peripheral blood. Then these they go to the, ये जो अंदर viscera है, bladder है, या हार्ट है, या GIT के blood vessels हैं, उनके लिए तो special sympathetic nerves हैं. But the blood vessel in my arms, blood vessel in my legs, उनको कैसे पहुंचती हैं? They join these fibers. They again postganglionic fiber. They join the somatic nerves. जो मेरे बाजुओं को somatic nerves आ रही है for the voluntary actions of my muscle, उन्हीं के अंदर blood vessel के लिए भी the sympathetic fibers are also running. So spinal nerves to the peripheral blood vessel, they contain the postganglionic neuron. तो special nerves भी supply होती हैं viscera को, और somatic nerves को भी join करते हैं from the and they go to the blood vessels in the periphery. This is very rough diagram. That is the intermediolateral horn in the T1 to L2, T1 से लेकर L2 तक इतने सेगमेंट में. यहाँ तो सिर्फ डायग्राम दिखाई हुई है. Preganglionic neurons are located in the spinal cord, and the fiber passes out. It synapses mostly in the sympathetic ganglia. That is sympathetic chain के ganglia. They are known as sympathetic ganglia. There is sympathetic chain on both sides of this vertebral column, and second neuron, the postganglionic neuron, goes to the blood vessel, either directly special sympathetic nerve or periphery पे जाने हैं, limbs में जानी है. These fiber will join the somatic nerves and they will go to the blood vessels in the periphery. So that is how the distribution, that is the. एंड यहाँ पे एक और बात भी नजर आ रही है, ताकि हम उसको डिटेल में देखेंगे. तो these are the preganglionic neuron, these are the postganglionic neuron. Postganglionic neuron sympathetic nerve भी सप्लाई हो सकती है जैसे हार्ट को सप्लाई होती है, लेकिन postganglionic neuron में join the somatic nerves, जो बाकी जनरल nerves हैं, to supply the peripheral blood vessel को सप्लाई करने के लिए. यहाँ पे एक और चीज नजर आ रही है. These preganglionic neurons, they are being affected by this neuron is coming from the vasomotor center in the medulla oblongata. We are going to discuss it. So this sympathetic system is being regulated by our central nervous system. There is a vasomotor center which is controlling all this activity
So vasomotor center is also important nervous system का. Sympathetic supply तो है, वो two neuronal system है, but there is control over this two neuronal system by the CNS, central nervous system. So this is again the diagram of that. That is between T1 and spinal cord. The vasomotor center is affecting. This is causing, and there is the spinal cord और उसकी जो nerves निकल रही हैं. These are the two sympathetic chains, and these are the special sympathetic nerves which are supplying to the heart, and these nerves may join the peripheral nerves to supply the blood vessel throughout the body. So that's how the distribution of these are the vasomotor fibers. These are known as vasomotor fibers. जो वेसल्स को हार्ट को सप्लाई है, दे आर नोन एज वेजोमोटर फाइबर. इसको हम डिस्कस करेंगे. दिस इज द वेजोमोटर सेंटर, ये जो लिखा हुआ वेजोमोटर सेंटर के डिफरेंट पार्ट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. वेजोमोटर सेंटर इज कंट्रोलिंग ऑल दिस एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम. इसको हम आगे बात करेंगे. Sympathetic fiber, they supply all the blood vessels except, सारे ब्लड वेसल को सप्लाई है एक्सेप्ट द कैपिलरीज. कैपिलरीज को तो सप्लाई नहीं है, पहले भी हमने बात की. कैपिलरीज एंड द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर दे आर वेजोमोशन. ये वो लोकल फैक्टर था विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दोज मसल्स. कार्बन डाइऑक्साइड लोकल फैक्टर जो हमने बात की. प्री कैपिलरी स्फिंक्टर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड, हाइड्रोजन एंड एक्सेट्रा, एडिनोसिन लोकल फैक्टर जो हैं. तो दीज कैपिलरीज, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स एंड मोस्ट ऑफ द मेटाट्रियोल्स, उनको सप्लाई नहीं है सिंपैथेटिक की. बाकी ब्लड वेसल को सप्लाई है. Sympathetic fiber to blood vessels are mostly, एक जनरल रूल जो mostly not always, mostly they are vasoconstrictor fiber. There are a few vasodilator fibers as well. ज्यादातर वेजोकंस्ट्रिक्टर फाइबर है. अल्फा जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स उनको बोलते हैं, वहां पे जब सिंपैथेटिक सप्लाई होती है देयर इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, एंड सो वेजोकंस्ट्रिक्टर फाइबर्स हैं ब्लड वेसल्स को. Arteriole and small arterioles supply controls the peripheral resistance and the blood flow. ये तो पता है ना, हमें पता है peripheral blood flow की कंट्रोल तो हम डिस्कस करके आए हैं लेक्चर में. आर्टेरियोल मेटाट्रियोल का रोल, वेजोकंस्ट्रिक्शन वेजोडाइलेशन causes increase or a decrease in the blood flow as well. That is important. Arteriole they are known as a resistant vessel. हमने क्लासिफाई किया था शुरू के लेक्चर्स में. That is the arterioles are known as the resistant vessel, and they are very important in the regulation of the blood pressure, because the resistance is the major factor determining the blood pressure. Two major factors are the cardiac output and the resistance. ये दो जो हैं, so the resistance, so the arteriole, metarteriole, the arteriole which are being supplied by the sympathetic nervous system. So this has sympathetic system has very important role in the regulation of this peripheral resistance and dense blood pressure. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सिंपैथेटिक सिस्टम का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है. रेजिस्टेंट का तो रोल यही नजर आ रहा है. हार्ट के कार्डियक आउटपुट का भी कंट्रोल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हैज गॉट वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यहाँ रेजिस्टेंट की बात हम कर रहे हैं, ब्लड वेसल की बात. बिग वेसल सप्लाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड. ये स्मॉल वेसल्स आर्टेरियोल को जो सप्लाई है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल सिंपैथेटिक सप्लाई. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर एंड रेजिस्टेंस. ब्लड प्रेशर रेजिस्टेंस एक ही बात होगी. ब्लड फ्लो एंड रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर उनको. और बिगर वेसल जो सप्लाई है, जिसको स्पेशली बिगर वेसल, वीनस साइड वाले बिगर वेसल, आर्टीरियल साइड वाली भी बात कर ले, एआर्टा की सप्लाई होगी, वो कंस्ट्रिक्ट करेगी, ब्लड विल बी पुश्ड ऑनवर्ड, बट स्पेशली बिगर वेसल ऑन द वीनस साइड. दिस सिंपैथेटिक सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द relocation, redistribution of the blood to different vascular fields. जब वीनस सिस्टम से रिजर्वायर से ब्लड जब चाहिए तो सिंपैथेटिक सिस्टम विल कॉज दी venoconstriction, bigger venoconstriction, and blood will be supplied to the main systemic vessels. Sympathetic innervation of blood vessels, ये पहले भी हमने ये बात करते. दिस डायग्राम इज फ्रॉम योर, वो पहले जो डायग्राम मैंने बताई थी, शायद मैंने कहीं और से उठाई है, गूगल से उठाई है, समथिंग. बहुत सी डायग्राम गूगल पर अवेलेबल होती हैं, वहां से हम उठा लेते हैं. तो
So the sympathetic, ये गाइटन एंड हाल से सप्लाई है. Sympathetic supply to the arterioles. Arterioles bigger vessels. Arteries को सप्लाई है, arteriole को सप्लाई. There is no supply to the metarteriole and capillaries. उनको नहीं सप्लाई है. Veins को भी सप्लाई है. Veins को, arteries को, arterioles को सप्लाई है. Veniole को भी किसी हद तक सप्लाई मौजूद है. So the sympathetic innervation of the blood vessel, capillaries और precapillary sphincters और metarteriole को नहीं है, बाकी vessels को है, चाहे वो arteriole venous side वाले हैं या arterial side वाले हैं. Arteries को भी सप्लाई है, veins को भी सप्लाई है. veins की सप्लाई अभी हम बात करेंगे. This is important for the relocation of the blood reservoir से blood जो लेके जाना है. ये हमने vessels की बात की. Sympathetic supply to the heart. That is also very important. This is sympathetic stimulation of the heart increases the heart rate. जनरली तो वेजोकंस्ट्रिक्शन करके रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, ब्लड फ्लो को कम कर रहा है या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड कर रहा है, जो भी कर रहा है सिंपैथेटिक सिस्टम. लेकिन हार्ट में इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट. हार्ट रेट जब बढ़ेगा दैट विल इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. So increases the force of the contraction of the heart. Rate भी बढ़ाता है, force भी बढ़ाता है. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? When rate is increased, cardiac output will increase. When force is increased, more powerful contraction, more squeezing action of the ventricle, it will also increase the stroke volume. So that both will. So rate increases, stroke volume increases, result is increased cardiac output per minute. Pumping of the heart is increased, जो हमने शायद पहले कहीं जिक्र किया था. Normal cardiac output is 5 liter and this can go to 30 liters, 35 liters in athletes. So this is the role of nervous system. Sympathetic system will increase the heart rate, will increase the force of the contraction of the heart and increase cardiac output. Vagus nerve the parasympathetic supply, जिसकी हमने जिक्र किया कि मेजर रोल नहीं है बट हार्ट को सप्लाई में रोल है उसका. वेगस नर्व से पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई टू द हार्ट इज वेगस नर्व. दिस वेगस नर्व causes reduced pumping ability. उल्टा है इसका इफेक्ट ऑन द हार्ट इज अपोजिट टू व्हाट वी ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम. दैट इज इट causes the decrease in heart rate and slight decrease in the force of the contraction as well. बट हार्ट रेट पे तो बहुत पावरफुल इफेक्ट है. इट causes ब्रेडिकार्डिया, रिड्यूस हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी किसी हद तक कम हो सकती है. Now this so sympathetic and parasympathetic both supplies are there, but this vasomotor center is controlling this visceral nervous system, especially the sympathetic nervous system. Vasomotor center located in the medulla. Vasomotor center, a cluster of neuron in the medulla. They send inhibitory signal to heart via vagus nerve. वेजोमोटर सेंटर वेगस नर्व के जरिए से भी कंट्रोल कर रहा है, जो थोड़ा सा उसका रोल है ब्रेडिकार्डिया पैदा करने में, वो तो इंपॉर्टेंट है. दैट इज सेंड इनहिबिटरी सिग्नल टू द हार्ट वाया वेगस नर्व. उनको पहले जिक्र कर रही है. बट sends excitatory signal to the heart and blood vessel via spinal cord via sympathetic nerves. Sympathetic nerves का major role जो है वो role है, that is also controlled by the vasomotor center. Vagus nerve का भी जो role है vasomotor center उसको affect करता है. So this is the it increase in the vasomotor activity causes generalized vasoconstriction. ये एक sentence जरा explanation मांगता है. When we call increased vasomotor activity, we are talking about special area in the vasomotor center, most important area in the vasomotor center, which is known as area C1. We are going to see that. हम आगे देखेंगे area C1 उसको कहते हैं. तो that is primary regulator of the sympathetic nervous system, area C1. So when we say increased vasomotor activity, it is the increased activity of the area C1. Area C1 is a vasoconstrictor area. उसको हम देखेंगे. जनरली वेजोमोटर सेंटर की एक्टिविटी बड़ा एरिया इसमें एरिया C1 है. वो स्टिमुलेट होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, वो इनहिबिट होगा, बाकी एरियाज इसी के थ्रू काम करेंगे.
तो दी एरिया C1 अगर स्टिमुलेट होगा इट विल कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन. सो स्टिमुलेशन ऑफ द वेजोमोटर एक्टिविटी वेजोमोटर सेंटर मींस स्टिमुलेशन ऑफ एरिया C1. इनहिबिशन ऑफ वेजोमोटर सेंटर मींस इनहिबिशन ऑफ एरिया C1. तो बड़ा एरिया यही है. डिक्रीज इन द एक्टिविटी कॉजेज जनरलाइज्ड वेजोडाइलेशन. अब क्या मतलब है? इनहिबिशन ऑफ द एरिया C1. एरिया C1 इनहिबिट हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे decrease activity of the vasomotor center and it will result into the vasodilatation. अब वेजोमोटर सेंटर को वेजोमोटर एक्टिविटी इज मोडिफाइड बाय ये वेजोमोटर सेंटर. अभी हमने उसके डिफरेंट एरियाज हमने नहीं देखे, सिर्फ मैंने नाम ले लिया एरिया C1 का. अभी हम देखते हैं बाकी एरियाज को देखते हैं. दिस वेजोमोटर सेंटर एज ए होल it is being influenced by many areas from the other parts of the nervous system. ये तो मेडुला में मौजूद है. इसको हम आगे देखते हैं कौन कौन से एरिया है मेडुला में, कहां पे है. But this area is being influenced by, being affected by many areas from the brain. So vasomotor activity is modified by input from periphery से आने वाले बैरोरिसेप्टर्स हैं. ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करने वाले बैरोरिसेप्टर प्रेजेंट इन दी पेरिफेरी, वो इसको अफेक्ट करेंगे. पेरिफेरी की बात कर रहे हैं. नर्वस सिस्टम मैंने बोल दिया था, नर्वस सिस्टम के भी इसको इनपुट्स हैं. पेरिफेरी वाले जो इनपुट्स हैं कौन कंट्रोल कर रहा है? बैरोरिसेप्टर्स. सारे ब्लड वेसल में, बिगर ब्लड वेसल में, हेड एंड नेक, चेस्ट एंड नेक रीजन में दे आर प्रेजेंट, उनमें मौजूद है बैरो रिसेप्टर. देन कीमो रिसेप्टर्स आर देयर. ये सारे हम डिस्कस करेंगे इन रिलेशन टू द ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम. दीज आर द रिसेप्टर्स इन द peripheral सर्कुलेशन. ये हमारे हार्ट के peripheral, हम periphery के हिसाब से कह रहे हैं, ब्रेन के हिसाब से कह रहे हैं, अदरवाइज हार्ट के तो करीब ही हैं. अदरवाइज पेरिफेरल सर्कुलेशन तो हम ये लिम्स वाली, दूर वाली ब्लड वेसल को बोलते हैं. So the chemoreceptor present in the blood vessels, baroreceptor present in the blood vessel, higher brain center जो मैं कह सेंटर से भी आ रहे हैं. Periphery से ये baरो and chemoreceptors are affecting the vasomotor activity and the brain के बहुत से parts they are sending the impulses. Hypothalamus and cerebrum बड़े जो एरिया हैं अभी आप जिक्र करेंगे. There are many areas, अभी तो सिर्फ लिखा हुआ hypothalamus cerebrum है. There are many areas in cerebrum और hypothalamus से कौन कौन से सिग्नल आते हैं. So they do affect, they vasomotor center को active, and vasomotor center then in turn acts on the those preganglionic neurons in the spinal cord. तो ये कंट्रोल हो रहा है. वेजोमोटर सेंटर को अब हम खोलने लगे हैं. व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ वेजोमोटर सेंटर. ये डायग्राम वहां पे आई थी, मैंने कहा आगे एक्सप्लेन करूंगा. दिस इज प्रोबेबली गाइडेंस की है, गाइडन एंड हाल से ही उठाई हुई डायग्राम है. वेजोमोटर सेंटर कंसिस्ट ऑफ, जरा छोटा लिखा हुआ इसलिए आया कि बहुत से एरियाज एक ही स्लाइड पे मैं दिखाना चाहता हूं. दिस इज नॉट गुड, ज्यादा ओवरलोडेड स्लाइड आई डोंट लाइक, बट यहाँ पे एक ही जगह दिखाने के लिए मैंने छोटे फॉन्ट्स इस्तेमाल किए. इट्स कंसिस्ट ऑफ वेजोमोटर सेंस कंसिस्ट ऑफ वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया बाइलेटरली एरिया C1. वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया C1, वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया C1, ये दोनों बाइलेटरली प्लेस्ड वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया, बाइलेटरली इसको कहते हैं एरिया C1. एंटीरियो लेटरल अपर मेडुला है, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द मेडुला है, और लेटरली प्लेस्ड और अपर पार्ट ऑफ द मेडुला है लिखा हुआ है. एंटीरियो लेटरल अपर मेडुला में बाइलेटरली प्लेस्ड एरिया वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया. दिस इज आल्सो नोन एज एरिया C1. दिस इज द मेन एरिया. बड़ा एरिया वेजोमोटर सेंटर का रेगुलेटरी एरिया यही है, एरिया C1. देन देयर इज वेजोडाइलेटर एरिया. दिस ये भी एंटीरियर ही लोअर मेडुला में मौजूद है बाइलेटरली. दैट इज वेजोडाइलेटर एरिया बाइलेटरल एरिया. एरिया A1 इसको कहते हैं. वेजोडाइलेटर एरिया इज नोन एज एरिया A1. इट इज एंटीरियर लेटरल लोअर मेडुला. ये एंटीरियर पार्ट, इसकी some parts are present on the posterior side of this medulla as well. हम anterior को देख लें, posterior side पे भी इसके न्यूरॉन, clusters of neuron और वेजोमोटर सेंटर के पार्ट्स मौजूद है. anterior पे हम देख रहे हैं वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया दोनों साइड पे, anterior साइड पे laterally placed है अपर मेडुला में, और एरिया C1, और लोअर मेडुला में बाइलेटरली प्लेस्ड जो एंटीरियर साइड पे जो नजर आ रहे हैं, दैट इज दी वेजोडाइलेटेड एरिया, एरिया A1 इसको कहते हैं.
इट इसका काम क्या है? वेजोडायलेटर कैसे है कि ये खुद सिग्नल नहीं, वेजोडायलेटर एरिया इनहिबिट्स दीस टू, सो इसका एक्शन थ्रू एरिया C1 है। तो एरिया A1 इज वेजोडायलेटर कैसे? इट इनहिबिट्स कंस्ट्रक्टर एरिया, उसको इनहिबिट करके वेजोडायलेटेशन करता है। तो एरिया वेजोडायलेटर एरिया इट इनहिबिट्स एरिया C1। देन देयर इज सेंसर एरिया, एरिया A2, वो कहां पे है? दैट इज पोस्टीरियर, यहां पे नजर नहीं आ रहा। That is the posterior aspect of the medulla, posterior lateral medulla and pons, ये posterior side पे है। और इसी तरह लेटर इसी के पिछले वाली साइड पे posterior lateral side of the medulla and pons में है। and receive signal, ये कौन सा है? sensory area। sensory area means it is receiving the signals और उसके मुताबिक it will send the signal to the this area or this area, finally this area, यही है, this will be, so there is the posterior lateral, posterior aspects of the medulla और pons का भी कुछ एरिया उसमें शामिल है। and it receives signal from the vagus nerve, glossopharyngeal nerve, कहाँ से? वो बैरोरिसेप्टर प्रीफ्री से जो बैरोरिसेप्टर एंड कीमोरिसेप्टर मौजूद हैं, उनसे ग्लासोफ्रेंजियल नर्व एंड वेगस नर्व आर ब्रिंगिंग द इंपल्सेस कि ब्लड प्रेशर को क्या हो गया, केमिकल्स को क्या हो गया, कीमोरिसेप्टर। हम देखेंगे ना कि कीमोरिसेप्टर क्या करते हैं, दे आर सेंसिटिव टू सम केमिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन, लैक्टिक एसिड, उनको सेंसिटिव है, उनके साथ क्या रोल है। बैरोरिसेप्टर ब्लड प्रेशर के साथ क्या रोल है। तो दीज इंफॉर्मेशन विल बी ब्रॉट टू विच एरिया? एरिया A2 ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ दिस मेडुला में पोस्टीरियर एस्पेक्ट पार्ट ऑफ द वेजोमोटर सेंटर। इट कंट्रोल एरिया C1 A1। ये कैसे कर रहा है? पोस्टीरियर पार्ट पे ये A1, इट इज रिसीविंग सिग्नल। अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन करनी है तो इसको सिग्नल भेजेगा, वेजो डायलिटेशन करनी है तो इसको भेजेगा, और ये then in turn will switch off the area C1। वेजो डायलिटेशन करनी है, ब्लड प्रेशर कम करना है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करनी है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, आर लाइक दैट। तो these सेंसरी एरिया A2 विल कंट्रोल द एरिया C1 और A1, जो दोनों है, ये दोनों एरिया उसको अफेक्ट करेगा। वहां से सिग्नल लेके इन दोनों एरिया को कंट्रोल करेगा, और फाइनल, जैसे मैंने कहा, फाइनल रेगुलेटर तो C1 है। A1 भी अगर कंट्रोल कर रहा है तो इट इज अफेक्टिंग द एरिया C1, उसके जरिए से काम कर रहा है। देन कार्डियो इनहिबिटरी एरिया, ये जो नजर आ रहा है आपको, वो लेटरली लोकेटेड नहीं है। दिस इज द मीडियल पोर्शन ऑफ द वेजोमोटर सेंटर, ये मीडियल पोर्शन ऑफ द वेजोमोटर सेंटर में दिस एरिया इज लोकेटेड, कार्डियो इनहिबिटरी एरिया। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेजोमोटर सेंटर which will affect the sympathetic nervous system as well as the parasympathetic nervous system. Cardio inhibitory area, this will affect, ये कैसे affect करेगा? This will affect the vagus nerve, ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट, पैरासिम्पैथेटिक नर्व को कार्डियो इनहिबिशन इसके जरिए से होगी। और आगे भी बात करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया will also will be affected by this as well. So the वेजोमोटर सेंटर के हम ये पार्ट्स, एरिया C1 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटीरियर में, अपर मेडुला में बाइलेटरली प्लेस, एंड देन द वेजोडायलेटर एरिया A1 लोअर मेडुला में एंटीरियरली बाइलेटरली प्लेस, एंड द पोस्टीरियर साइड पे एरिया A2 विच इज द सेंसरी सिग्नल रिसीव करता है फ्रॉम द पेरिफेरी बैरोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर से, एंड देन इट अफेक्ट्स द एरिया A1 और C1, उनको कंट्रोल करता है। और कार्डियो इनहिबिटरी जो मीडियल पोर्शन में मौजूद है वेजोमोटर सेंटर के, कार्डियो इनहिबिटरी एरिया, ये 5-6 एरियाज हैं वेजोमोटर सेंटर के। नाउ वन टर्म वी मस्ट नो, वेजोमोटर टोन, पहले मैंने कहीं जिक्र किया था। टोन, यू नो दी स्केलेटल मसल की टोन, पार्शियल स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, उसका मैकेनिज्म है, नर्वस मैकेनिज्म टोन की मेंटेनेंस का। पार्शियल स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन, कंप्लीट रिलैक्सेशन में भी देयर इज सम कंट्रैक्शन व्हिच इज देयर, वो रिफ्लेक्स फिनोमेना, रिफ्लेक्सली इट इज मेंटेन, इट इज नॉट एन, these are the skeletal muscles are voluntary muscle, but the tone is not voluntary, ये involuntary है, this is reflex phenomena, वो maintain रहती है। Smooth muscles of the blood vessels as well,
they are being they are supplied by the sympathetic nerve. There is a sympathetic tone as well, which is known as vasomotor tone. There is constant regular signals from the area C1. अब हम sympathetic tone को कहाँ से control कर रहे हैं? Area C1 से. C1 area stimulated causes the stimulation of the preganglionic neurons, and this is the sympathetic stimulation. तो एरिया C1 स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा? The preganglionic neurons of the sympathetic system will be stimulated. Postganglionic neuron will be stimulated, so sympathetic system is stimulated. So there is constant regular firing signals from the area C1 to all the sympathetic system, and this is known as the partial state of contraction of the smooth muscle will be there. Its effect will be there on the heart as well. Heart को भी supply तो है ना, the same sympathetic supply. So partial state of contraction in the smooth muscles of the blood vessel, vasoconstriction, as we know. General effect of the primary effect of the sympathetic system to the blood vessel is vasoconstriction. So partially blood vessels are constricted. So this is known as vasoconstrictor tone, vasomotor tone या sympathetic tone, कुछ भी लफ्ज बोले. वेजोमोटर टोन ये सबसे अच्छा आसान लफ्ज है. दिस इज वेजोमोटर टोन, दिस इज पार्शियल स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन. अब इसका फायदा क्या है? इफ द ब्लड प्रेशर हैज टू बी increase to this will vasomotor tone will it will be further impulses आएंगे, vasoconstriction will occur. लेकिन vasomotor tone is there if blood pressure has to be decreased, कभी कम भी करना पड़ जाता है, then there will be, इस tone को withdraw करेगा our system and there will be vasodilatation. तो दोनों साइड पे ले जाने के लिए वेजोमोटर टोन का फायदा क्या है कि दोनों साइडों पे कंट्रोल इज पॉसिबल. इंक्रीज करना भी पॉसिबल है, डिक्रीज करना भी पॉसिबल है. So the vasoconstriction is there. Sympathetic vasoconstrictor tone इसको कहते हैं, sympathetic tone कहते हैं, sympathetic vasoconstrictor tone कहते हैं, vasomotor tone कहते हैं. सारे these are the synonyms. ये सारे लफ्ज आप बोल सकते हैं. Absence of vasomotor tone leads to the tremendous fall in the blood pressure. हाँ, अगर vasomotor tone रोक दे, ये कहाँ से आ रहे हैं सिग्नल? They are coming from the sympathetic प्रीगैंग्लियनिक न्यूरॉन. अगर हम किसी को एनेस्थीसिया दे दें, स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दें, ये सिंपैथेटिक फाइबर्स का जो फायरिंग है, कांस्टेंट फायरिंग है, जो टोन जा रही है, उसको रोक दें, क्या हो? ऑल द ब्लड वेसल विच हैव गॉट दी टोन, वो टोन खत्म हो जाएगी. देयर विल बी वेसोडाइलेटेशन, ब्लड प्रेशर ट्रेमेंडसली फॉल्स. ये हमने कहीं जिक्र किया था when we were talking about the this blood flow in the resistant vessel etc. हमने बात की थी. when we were calculating the peripheral resistance, वहां पे जिक्र किया था. when we were talking about the how we calculate the 1 PRU and it may be reduced, vasomotor tone बिल्कुल खत्म कर दें, it may go to the 0.2 PRU, ये जिक्र किया था. तो tremendous fall in the blood pressure, peripheral resistance कैसे कम होगा? vasomotor tone को inhibit करें, withdraw करें. absence of vasomotor tone tremendously reduces the peripheral resistance and the blood pressure will fall. So and vasoconstriction is due to the alpha adrenergic receptor. ये भी थोड़ा सा मैंने जिक्र किया है. Mostly the sympathetic supply is here on the alpha. There are types of adrenergic receptor: alpha adrenergic receptor, beta adrenergic receptor. Alpha adrenergic receptors are vasoconstrictor and beta adrenergic receptors may be vasodilator. ये भी हम बात करते हैं. तो अल्फा मोस्टली सारे ब्लड वेसल को अल्फा एड्रेनर्जिक सप्लाई है एंड दिस इज कॉजेज वेसोकंस्ट्रिक्शन. इस पे जब सिंपैथेटिक सप्लाई होती है तो इट कॉजेज वेसोकंस्ट्रिक्शन. बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कॉज वेसोडाइलेशन. मिसाल के तौर पर सम ब्लड वेसल्स इन दी मसल्स, मसल में देयर आर द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर फॉर दी सिंपैथेटिक सिस्टम, उसके लिए है एंड दे कॉज वेसोडाइलेशन. वो चाहिए. एक्सरसाइज में देयर इज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, टू मेंटेन दी ब्लड फ्लो टू दी कंट्रैक्टिंग मसल, उनको ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए. लेकिन अगर वहां पे अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर भी हो तो वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो ब्लड फ्लो कैसे होगा?
तो अल्लाह तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, बेहतरीन पैदा करने वाला अल्लाह पाक ने निज़ाम ऐसा रखा है। देयर आर बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर लगा दिए, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रही है, सारी बॉडी में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, मसल में वेजो डायलेटेशन हो रही है एक्सरसाइज के दौरान, टू सप्लाई मोर ब्लड फ्लो टू दैट। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करना भी जरूरी है और मसल को भी ब्लड सप्लाई जरूरी है। सो दैट इज द, बाकी सारे ब्लड वेसल को अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है मसल में, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर फॉर वेजो डायलेटेशन। सो alpha types of the receptors for this sympathetic system. Effect of inhibition of vasomotor tone, वो जो मैं बात कर रहा हूँ, peripheral resistance will be reduced. If you withdraw the vasomotor tone, then the blood pressure will fall. The vasomotor tone will be absent and resistance will decrease and blood pressure will fall. This is the diagram showing you the effect of withdrawal of vasomotor tone. This is normal blood pressure. टोटल स्पाइनल, यहाँ पे ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, दिस इज द आर्टीरियल प्रेशर। टाइम के साथ देख रहे हैं, टाइम में क्या कर रहे हैं, दिस इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इट इज अराउंड 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, नॉर्मल के करीब है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, एंड वी गिव स्पाइनल एनेस्थीसिया हियर। स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे, देन द वेजोमोटर टोन आपने विड्रॉ कर ली, दैट इज नॉर्मल इंपल्सेस व्हिच वर ऑटोमेटिकली गोइंग, कांस्टेंट फायरिंग हो रही थी, दे हैव बीन विथड्रॉन, वो विड्रॉ किया तो देयर विल बी डिक्रीज रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर हैज फॉलन टू ओनली 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गया है, so blood pressure has fallen. So that is the effect of the withdrawal of inhibition of the vasomotor center, so blood pressure falls. एक और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में एक चीज उन्होंने ऐड की हुई है, why this has fallen, because of the absence of vasomotor tone. vasomotor tone की एब्सेंस का क्या मतलब है, सिंपैथेटिक सिस्टम के एंड पर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो नहीं है, वो अगर हम दे दें तो काम हो जाएगा ना, वो क्या है, दैट इज द इंजेक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। वेजो सिंपैथेटिक फाइबर, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन सिंपैथेटिक फाइबर पे रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होता है, दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन। ये एनेस्थीसिया देके यू हैव स्टॉप दैट नॉरएपिनेफ्रिन एंड ब्लड प्रेशर हैज फॉलन। अगर आप इंजेक्शन दे देंगे नॉरएपिनेफ्रिन का तो इसका मतलब है वो सप्लाई कर दिया है, इट विल अगेन गो अप, इट विल गो अप, लेकिन वो कितना देर रहेगा, एनेस्थीसिया तो जारी है, तो वो तो नॉरएपिनेफ्रिन ब्लड प्रेशर रेज करेगी, फिर खत्म हो जाएगी, इट विल अगेन रिटर्न टू द बैक, जब तक आप ये खत्म नहीं करते, सिंपैथेटिक टोन को बहाल नहीं करते। तो सिंपैथेटिक टोन स्पाइनल एनेस्थीसिया को जब तक बहाल नहीं करते, तो then this blood pressure will remain fall. So effect of inhibition of vasomotor tone is in the form of very low blood pressure. Blood pressure will fall. ब्रेन एरियाज विच अफेक्ट द वेजोमोटर एक्टिविटी, वो दो एरिया तो हमने जिक्र कर लिए, बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, वो उसका इफेक्ट है, वो एरिया A2 पे पोस्टीरियर साइड ऑफ द मेडुला पे इफेक्ट करेगा एंड वेजोमोटर एक्टिविटी विल बी चेंज। ब्रेन से जो डिफरेंट एरियाज विच आर अफेक्टिंग, वहाँ पे आपने सिर्फ सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस लिख दिया था, उनको जरा खोलते हैं। डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन विच अफेक्ट द वेजोमोटर एक्टिविटी, BM वेजोमोटर को, that is, you can see this is the vasomotor center, it is from the orbital cortex, cingulate cortex, motor cortex, reticular activating system, mesencephalon, temporal lobe से भी आ रहे हैं। तो different areas of the brain से pons ये है, medulla ये है, vasomotor center को brain के बहुत से area से, this is the cingulate gyrus, cingulate, that is the limbic system से भी आ रहे हैं, तो लिम्बिक सिस्टम, मोटर कार्टेक्स से भी आ रहे हैं, और ये एंटीरियर मोटर एंड द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से भी सिग्नल्स आर कमिंग टू वेजोमोटर सेंटर पे। देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ मेनी एरियाज ऑफ द ब्रेन, दे आर सेंडिंग इंपल्सेस टू दिस वेजोमोटर सेंटर, सो दे विल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द वेजोमोटर सेंटर। ये हम लिस्ट कर लेते हैं, दोज आर दी मैनी एरियाज ऑफ द ब्रेन इन्फ्लुएंस दी वेजोमोटर सेंटर, स्पेलिंग शायद गलत है, इन्फ्लुएंस दी वेजोमोटर एक्टिविटी। पॉन से आ रहे हैं सिग्नल, इसको डायनसेफेलॉन से आ रहे हैं, मेसेनकेफेलॉन से आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं, एंड मोटर कार्टेक्स से आ रहे हैं, डायग्राम में हमने देखा था, एंड द ऑर्बिटल एरिया से आ रहे हैं, एंड दी टेम्पोरल एरिया, टेम्पोरल बोन से आ रहे हैं, एंड दी सिंगुलेट गायरस से आ रहे हैं, सो दी एमिगडाला से आ रहे हैं,
So there are many areas, जानते थे, and some of them they are the part of the limbic system, emotional control system, hypothalamus भी उनका हिस्सा है. For example, vasomotor center will be activated by गुस्सा. This गुस्सा is not the function of heart. This anger is not the function of the heart, but that is the function of the limbic system. उसको आएगा, but that will influence the heart, that will increase the heart rate and blood pressure and cardiac output, what not. So there are many areas are the. और ख्वाब में भी अगर आपको डर लग गया तो ब्लड प्रेशर में चेंज. So that affect, so different areas of the brain. कोई आपने अच्छा सीन किया है, you may be feeling pleasant, blood pressure will be affected. बुरी चीज आपने देख ली है नजर से, कानों से बुरी चीज आवाज सुन ली, that is the temporal area भी involved है, temporal area में that is. तो अगर कोई बुरी sound सुन ली है, that will affect your blood pressure. So vasomotor center is being acted by the many activities in the brain. मोटर एक्टिविटी से भी. तो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, मोटर एरिया बीइंग इन्वॉल्व, वेसोमोटर सेंटर को सिग्नल जाएंगे तो तब ब्लड प्रेशर विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. So different parts of the brain they send signal to the vasomotor center, and accordingly adjustment in the vasomotor activity for the adjustment of the circulation will take place. Hippocampus, that is the part of the again limbic system. Role of adrenal medulla. So sympathetic system is the main regulator of this cardiovascular system. Increase करना है या decrease करना है through sympathetic system होगा. Adrenal medulla, that is the one of the endocrine gland, adrenal medulla, that produces sympathetic stimulation from to the adrenal medulla is there, and that causes release of epinephrine and norepinephrine from the adrenal medulla. थोड़ी सी डिटेल इसमें है कि प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन सप्लाई होते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक नहीं है वहां डिस्कशन का. सिंपली स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम causes release of epinephrine and norepinephrine from the adrenal medulla as well. Stimulation of the sympathetic supply to all the body is responsible for the mostly release of नॉरएपिनेफ्रिन. वो तो हमने अब डिस्कस कर लिया, बात कर लिया. लेकिन एड्रिनल मेडुला को जो सिंपैथेटिक फाइबर जा रहे हैं वो प्री गैंग्लियनिक हैं, उसमें उस डिटेल में आज हम नहीं जा रहे. सो दैट विल कॉज द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला एज वेल, and this is a hormone, it will be absorbed into the blood in the adrenal medulla. एड्रिनल मेडुला के ब्लड में वहां से सारे ब्लड में शामिल हो गए. सो दिस एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन विल बी सर्कुलेटिंग इन द ब्लड. वैसे तो अभी तक हमने सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग पर नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर रिलीज की थी. नाउ दिस इज ए हार्मोन सर्कुलेटिंग इन एवरी पार्ट ऑफ द ब्लड की कैपिलरीज में फ्लो कर रही है. सो इट विल अफेक्ट दी दोज बीटा रिसेप्टर्स और दी अल्फा रिसेप्टर जिसको भी उसने काम करना है. सो दिस एड्रिनल इट विल कॉज द सेम इफेक्ट. जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का इफेक्ट है वो ये इफेक्ट यहाँ पे भी होगा. इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट, कार्डियो एक्सेलरेशन लिखा हुआ है. इट विल इंक्रीज दी जनरलाइज वेसोकंस्ट्रिक्शन, जनरली वेसोकंस्ट्रिक्शन करती है. अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर विल बी स्टिमुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्शन, सो इट विल इंक्रीज द वेसोकंस्ट्रिक्शन, इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. कार्डियो एक्सेलरेशन को हम सिर्फ एक लफ्ज लिख दिया है कार्डियो एक्सेलरेशन, बट यू शुड बी केयरफुल. वो उसको पता होना है कार्डियो एक्सेलरेशन का रिजल्ट क्या है. मोर फोर्स ऑफ द कंट्रक्शन, मोर रेट ऑफ द कंट्रक्शन, मोर कार्डियक आउटपुट. All that will occur. So that will, and generalized vasoconstriction means increased resistance and increased blood pressure. So vasodilatation via beta adrenergic receptor, generally it is vasoconstrictor. Like same norepinephrine will be affecting the beta adrenergic receptor wherever they are present. So there will be vasodilatation as well in those areas. वो थोड़े से एरिया है. Sympathetic nerves to the skeletal muscle, ये है बीटा adrenergic वाले. बीटा एड्रिनर्जिक वाले में एक और फर्क भी है, जरा सा हम बात करते हैं. दैट इज सिंपैथेटिक वेसोडायलेटर फाइबर टू द वेसल इन द स्केलेटल मसल. ये पहले हम जिक्र कर चुके हैं. सिंपैथेटिक फाइबर्स आर वेसोडायलेटर फाइबर्स टू द मसल्स. ये भी हो सकता है. दैट इज, वैसे तो हमने क्या
बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, एड्रीनलिन रिलीज, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रही है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंड बीटा वाले रिसेप्टर हैं इट काजेज। एक और रीजन भी हो सकती है, दी फाइबर विच आर सप्लाइंग द स्मूथ मसल्स इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द मसल्स, दे आर नॉट एड्रीनर्जिक, कुछ कोलिनर्जिक है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है एंड एसिटाइलकोलिन इज वेसोडाइलेटर इन द मसल्स। So the cholinergic post ganglionic fiber and beta adrenergic receptor, इसको तो हम बात कर चुके हैं, दोनों बातें स्केलेटल मसल के ब्लड वेसल के साथ हैं। बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर वेसोडाइलेटेशन करते हैं और कोलिनर्जिक अगर फाइबर्स हैं दे आल्सो कॉज द वेसोडाइलेटेशन। so the anterior hypothalamus is controlling this, दैट इज ये जो बीटा एड्रीनर्जिक का एसिटाइलकोलिन वाले हाइपोथैलेमस का पार्ट है विच इज कंट्रोलिंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। So the anterior hypothalamus is controlling this activity of the blood supply to the skeletal muscle during exercise जब ज्यादा जरूरत होती है vasodilatation occurs. Probably important only for the anticipatory increase in the blood flow before the exercise. ये जो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है इन दोनों के जरिए से ब्लड सप्लाई इन द मसल, ये शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटीसिपेटरी राइज इन द ब्लड। अभी मैं सोच रहा हूं फुटबॉल खेलने जा रहा हूं, अभी इस सोच से the hypothalamus will be affected, it will increase the blood flow in the cholinergic form में या beta adrenergic form में जो भी receptors हैं, there will be anterior hypothalamus will send the signal for this, anterior hypothalamus will be involved in that system of thinking जब exercise के लिए तैयारी कर रहा हूँगा, और so there will be some rise in the blood flow in the muscle, anticipatory rise in the increase in the blood flow even before exercise। तो एक्सरसाइज के दौरान तो फिर सिंपैथेटिक सिस्टम है जनरली स्टिमुलेटेड और उसमें फिर बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो ब्लड फ्लो टू द मसल इज इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक फिनोमेना वेसोवेगल सिनकपी, ये जिक्र किया था मैंने, जिसको कहते हैं इमोशनल फेंटिंग। किसी ने कोई बुरी खबर सुन ली है, द पर्सन मे फेंट, उसका निजाम क्या है, दैट इज नोन एज वेसोवेगल सिनकपी। ये ब्लड प्रेशर का ही फॉल होता है सडनली, दैट इज द intense emotional disturbance will cause the stimulation of the sympathetic vasodilator system। ये बात सिंपैथेटिक वेसोडाइलेटर सिस्टम, वो जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, अभी पिछली स्लाइड पे हमने देखा एंटीरियर हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है वेसोडाइलेटेशन सिस्टम। तो द इंटेंस इमोशनल डिस्टर्बेंस विल कॉज द स्टिमुलेशन ऑफ दैट एंटीरियर हाइपोथैलेमस एंड देयर विल बी वेसोडाइलेटेशन सिस्टम इन द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। अच्छा, जनरली आप ये बात भी याद रखें, सिंपैथेटिक सिस्टम इज स्टिमुलेटेड एज अ होल आर इनहिबिटेड एज अ होल, ऐसे होता है। वेदो मोटर, वेदो कंस्ट्रक्टर, वो जो मोटर या स्टिमुलेट होगा पूरा सिंपैथेटिक, इसको कहते हैं मास डिस्चार्ज। सिंपैथेटिक सिस्टम इज द मास डिस्चार्ज सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम जब स्टिमुलेट होगा पूरी बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है, तो वेसोडाइलेटेशन पूरी बॉडी में वेसोडाइलेटर सिस्टम विल बी स्टिमुलेटेड एंड इट कॉजेज इनहिबिशन ऑफ द वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया। वेसोडाइलेटेशन कैसे काम करता है, वेसोडाइलेटर एरिया भी वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया के जरिए से काम करता है। एरिया A2 की जो बात की थी, दैट इज इनहिबिटिंग द एरिया A1 इज इनहिबिटिंग द एरिया C1। तो वेसोडाइलेटर एरिया जो बात की थी, so inhibition of the vasoconstrictor system, that is area C1 will be inhibited and there will be stimulation of the central cardio inhibitory area जो हमने बात की थी, this is, and the heart rate will be reduced। So on one hand there is vasodilatation which will reduce the peripheral resistance, and on the other hand vagus nerve will be stimulated and there will be reduced heart rate, that will reduce the cardiac output। So cardiac output is also reduced, peripheral resistance is also reduced, that results into reduction of both the determinants of the blood pressure, resistance as well as cardiac output, they will be reduced, so blood pressure will reduce, the person will faint।
blood pressure falls very quickly. This is known as emotional fainting. This is known as vasovagal syncope. Vessels are being dilated and vagus nerve is vessels are being dilated. Vagus nerve stimulation of the heart is reducing the heart rate, so it causes the sudden fall in the blood pressure, and the person may lose the consciousness. Loss of consciousness, fainting will occur, and this is mediated by via anterior hypothalamus. मैंने जिक्र किया, that is the emotion is being controlled by the hypothalamus. That is the part of the control of the emotions. Limbic system is controlling the emotion, so hypothalamus, anterior hypothalamus is involved in this, and this is known as the mediated via the anterior hypothalamus. This is known as vasovagal syncope. This is the emotional fainting. Nervous system आगे हम डिटेल में बात करेंगे. नर्वस सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट फॉर, ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम देखेंगे ये ब्लड प्रेशर के कंट्रोल का सिस्टम है. अभी हमने ये भी ब्लड प्रेशर का फॉल ही था, वेसोवेगल सिंकपी जो है. Role of nervous system in blood pressure is very rapidly blood pressure is regulated. Blood pressure homeostasis is in the hand of the nervous system. Nervous system, very rapid blood pressure homeostasis. Rapid increase in the blood pressure is brought about by the sympathetic vasoconstriction of the arterioles. ये होना चाहिए. Resistant vessel or sympathetic supply है, that increases the peripheral resistance, and sympathetic vasoconstriction increases the venous resistance. Venous return, sorry. It will increase the venous return when there is sympathetic system is stimulated, peripheral resistance is increased, venoconstriction. This is sympathetic venoconstriction increases the venous return, and sympathetic stimulation of the heart increases the cardiac output. That is the increased heart rate, increased force of the contraction, all will increase the cardiac output. So increase venous return, increase cardiac activity will increase the cardiac output. So reciprocal inhibition of the parasympathetic, ये भी साथ साथ काम होगा, vagus nerve को inhibit. So all this will lead to increased blood pressure. So very rapidly this will occur. For example, during exercise, when the person performs exercise, increases the requirement of oxygen throughout the body. So beta-adrenergic vasodilatation should occur in the muscle, and the generalized sympathetic stimulation causes vasoconstriction, increased blood pressure, vasoconstriction throughout the body, increased heart rate, increased force of the contraction. So blood pressure बढ़ रहा है, which is increasing the blood flow to the muscle, and the muscle के अंदर vasodilatation हो रही है to maintain the more blood flow in the muscle. So blood pressure is rising to increase the blood flow, and vasodilatation is occurring in the muscle beta adrenergic के जरिए से to increase blood flow to the muscle during exercise. Nervous regulation of reduced blood pressure. Sympathetic stimulation causes arteriolar constriction, ये उसको हम बार बार मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं. दैट इज नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए कैसे ठीक करेगा, डिटेल में तो हम ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे. होता ये है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन विल अकर एंड इट विल कॉज द आर्टेरियोलर कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वेनो कंस्ट्रिक्शन, मोर venous return, blood is relocated, displacement of the blood from the large vein into the heart, more vigorous contraction of the muscle, Frank-Starling mechanism, more venous return, and this will cause the increased activity of the heart. It will increase the heart rate and the increased force of the contraction and the cardiac output. All this will lead to increased cardiac output. All of these cause either increased peripheral resistance or increased blood pressure. दोनों बढ़ते हैं. Cardiac output भी बढ़ रहा है, peripheral resistance भी बढ़ रहा है. Both will affect the blood pressure. So blood pressure को ऐसे कंट्रोल करते हैं. Rapidity of the nervous system regulation कितना rapid है? Negative feedback, rapid mechanism is there. Stimulation may double the pressure within 5 to 10 minutes. इतना तेजी से काम करता है कि blood pressure double हो सकता है within 5 minutes. And the inhibition may reduce the blood pressure only to 50% within seconds. ये vasovagal syncope को भी हमने देखा है. Emotional disturbance, एक खबर सुनी नहीं और बेहोश हुआ नहीं. So it is within seconds vasodilatation, this may cause the vasovagal syncope, and within minutes the blood pressure may be double. So this rapidly acting mechanism is
रैपिड मैकेनिज्म्स आर ब्लड प्रेशर के होम्योस्टेसिस में, कंट्रोल में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में नर्वस सिस्टम इज वेरी रैपिड. इन हैवी एक्सरसाइज द आर्टीरियल प्रेशर में राइज 30 to 40%. ये अभी हमने देखा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है. एंड जनरलाइज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड अलार्म रिएक्शन, मास डिस्चार्ज अभी हमने बात किया. जनरल सिंपैथेटिक सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है एज ए होल पूरी बॉडी में स्टिमुलेट होते हैं, मास डिस्चार्ज होता है. तो दैट्स द रोल ऑफ nervous system. सिर्फ local control of blood flow is important, but the over and above this nervous system also contributes at these times जब ये चाहिए मोर जनरलाइज एक्टिविटी बढ़ाने या कम करने के लिए. नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो अब हम आगे जाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए अल्लाह पाक ने 8, 10, 12 किस्म के सिस्टम दिए हुए हैं. उनमें से कुछ हम इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे. देयर आर रैपिड एक्टिंग मैकेनिज्म जो नर्वस ही होंगे. वी आर गोइंग टू सी दैट रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म फॉर द ब्लड प्रेशर. कुछ इंटरमीडिएट मैकेनिज्म है. देन देयर इज लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर. लॉन्ग डिस्कशन है, 3, 4, 5 लेक्चर हम इसमें लेंगे इंशाल्लाह ताला. तो नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इंशाल्लाह. तो होप you will be able to understand अब तक जो हमने डिस्कस किया है. if you have got some query, some problem, some questions, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें और I will be glad to explain those. and सब्सक्राइब भी करें हमारे पेज को और शेयर भी करें बाकी स्टूडेंट के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके. ये अगर हमसे कुछ फ़ायदा हो सकता है तो ये बाकी लोगों तक पहुंच सके, हमारा सदका जारी होगा. थैंक यू वेरी मच. होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.